the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 103. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस लेसन आई वुड लाइक टू से अ वेरी शॉर्ट थिंग कि बी रियलिस्ट इन योर लाइफ. ज़िंदगी में हकीकत पसंद हो जाएं एंड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, यानी जो बात कहनी हो सच कहें तो यू विल गेट सक्सेस, आपको कामयाबी मिलेगी. नेवर एवर लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कभी भी तसव्वुर की दुनिया में नहीं रहना चाहिए बल्कि लिव इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. हकीकत की दुनिया में रहेंगे तो यू विल गेट सक्सेस. एनीहाउ, लेट्स गो बैक टू द लेसन. सबक की तरफ चलते हैं और इस वीडियो लेसन के अंदर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसा कि उसे मानना पड़ेगा वो बातचीत करने में माहिर है. अच्छा, यहाँ दो बातें हो रही हैं. एक तो ये कि उसे मानना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि वो बातचीत करने में माहिर है. इसी तरह बाज़ वक़्त हम ये बोलते हैं कि मानना पड़ेगा कि वो मसाइल हल करने में माहिर है, या समटाइम्स वी से मानना पड़ेगा कि वो दोस्ती निभाने में माहिर है. यानी कोई शख्स अगर किसी काम में माहिर हो तो आइए देखेंगे कि हम इनको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं. अब सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे. अच्छा, स्ट्रक्चर में चूँकि मैं साथ साथ ग्रामर के पॉइंट्स और ये छोटी छोटी बातें डिस्कस करता रहता हूँ ताकि एक तो आपके जहन में बैठ जाए, फिर जुमलों को बार बार रिपीट भी इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े बल्कि सुनने के बाद ही आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएँ. अच्छा, सब्जेक्ट के बगैर तो सेंटेंस बनता ही नहीं है, चूँकि सब्जेक्ट होगा तो बात चलेगी ना. चाहिए तो सब्जेक्ट के बाद हैव टू एडमिट, यानी मानना पड़ेगा. हैव टू कम शोज कंपल्शन, जब भी लाजमी कोई काम करना हो फिर हम हैव टू का यूज़ करते हैं. हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा. अच्छा, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई हैव टू एडमिट, मुझे यानी मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा. वी हैव टू एडमिट, हमें मानना पड़ेगा. यू हैव टू एडमिट, तुम्हें मानना पड़ेगा. लेकिन अगर ही शी की बात होगी तो फिर ही हैव नहीं आएगा बल्कि ही हैज़ टू एडमिट, शी हैज़ टू एडमिट, या फादर हैज़ टू एडमिट, अबू को मानना पड़ेगा. यानी अगर ही शी इट आ जाए या थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम हैव की जगह हैज़ इस्तेमाल करेंगे. इन द सेम वे सेकंड क्लास के अंदर सब्जेक्ट के बाद बी इस्तेमाल किया, और बी आपको मैं अक्सर बता देता हूँ कि हम इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते बल्कि प्रेजेंट के लिए इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट के लिए वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद माहिर होना की इंग्लिश होती है एक्सपर्ट इन. अच्छा, एक्सपर्ट इन के बाद या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे या नाउन लगा देंगे. यानी एक्सपर्ट इन के बाद या तो हम इंग फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे या नाउन इस्तेमाल करेंगे. आइए अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं और इससे हमें सारी ये बात क्लियर हो जाएगी. मानना पड़ेगा कि वो खाना पकाने में माहिर है, यानी इसका मतलब कि ये मुझे मानना पड़ेगा कि वो खाना पकाने में माहिर है. आई हैव टू एडमिट शी इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग. उससे मानना पड़ेगा वो बातचीत करने में माहिर है. अब देखिए यहाँ मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, आई की जगह ही यूज़ किया और ही के साथ हैज़ टू का यूज़ किया है. He has to admit she is expert in communication. अच्छा, communication ये noun है. अगर हम चाहते तो यहाँ मैं in chatting भी लगा सकता था, लेकिन मैंने कहा एक noun की भी एग्जांपल दे दी जाए. He has to admit she is expert in communication. उसे मानना पड़ेगा वो बातचीत करने में माहिर है. He has to admit she is expert in communication. हमें मानना पड़ेगा वो अपने काम में माहिर हैं. अब देखिए यहाँ फिर सब्जेक्ट चेंज किया. We के साथ have to यूज करते हैं. We have to admit they are expert in their work. अब जब वर्क भी नाउन है, we have to admit they are expert in their work. मानना पड़ेगा कि वो मसाइल हल करने में माहिर है, या मानना पड़ेगा वो मसाइल हल करने में माहिर है. I have to admit he is expert in problem solving. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग इंग फॉर्म यूज किया एक्सपर्ट इन के बाद हमने I have to admit he is expert in problem solving. उसे मानना पड़ेगा वो पैसा बचाने में माहिर है. He has to admit she is expert in saving money. अच्छा, पैसे बचाना अच्छी आदत है, यानी इट्स अ गुड हैबिट टू सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे. बुरे वक्त के लिए कुछ बचाना चाहिए. तो he has to admit she is expert in saving money. उसे मानना पड़ेगा वो दिल जीतने में माहिर है. He has to admit she is expert in winning hearts. He has to admit she is expert in winning hearts.
ماننا پڑے گا کہ تم مجھے خوش کرنے میں ماہر ہو. I have to admit you are expert in making me happy. I have to admit you are expert in making me happy. اچھا جب ہم کوئی لمبا سینٹینس ہو اور اس میں کوما دے دیا جائے تو اٹ مینس کہ آپ یہاں اپنے سانس کو توڑ سکتے ہیں. ادروائز ایک سینٹینس کو ہم ایک ہی سانس میں بولتے ہیں, لیکن چونکہ اس میں ہم نے کوما دیا ہوا ہے ایک کلاس کے بعد, جیسے I have to admit, تو آپ یہاں سانس توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد you are expert in making me happy, یہ ایک ہی سانس میں بولیں گے. اچھا ماننا پڑے گا تم کھیلنے میں ماہر ہو. I have to admit you are expert in playing. I have to admit you are expert in playing. اچھا یہاں پر ایک لفظ چینج کر لیں. فرض کیا پلینگ کی جگہ پر آپ ریڈنگ کا لفظ یوز کرنا چاہتے ہیں. ماننا پڑے گا کہ تم پڑھنے میں ماہر ہو. I have to admit you are expert in reading. یا ماننا پڑے گا تم شرارتیں کرنے میں ماہر ہو. I have to admit you are expert in making mischief. I mean ایک ورب کو ایک لفظ کو چینج کریں. You can make as many sentences as you like. جتنے چاہیں جملے بنا لیجئے صرف ایک لفظ چینج کر کے. ہمیں ماننا پڑے گا تم سب مذاق کرنے میں ماہر ہو. اب دیکھیں we have to admit you all are expert in joking. We have to admit you all are expert in joking. اسے ماننا پڑے گا وہ باتیں کرنے میں ماہر ہے. He has to admit she is expert in chatting. اب دیکھیں یہاں ہم نے کمیونیکیشن کا لاسٹ ٹائم لفظ یوز کیا, یہاں ہم نے چیٹنگ کا لفظ یوز کیا, انک فارم یوز کر لیا ہے. He has to admit she is expert in chatting. اب دیکھیں یہاں اگر ایک سینٹنس آپ کو یہ آ جاتا ہے اور آپ چیٹنگ کی جگہ کوئی بھی لفظ لگاتے ہیں, it will become a new sentence. For example, he has to admit she is expert in stitching. یا he has to admit she is expert in singing. یا he has to admit she is expert in working. Like I mean کوئی بھی ایک لفظ لگائیں اور you can make new sentences. اسے ماننا پڑے گا وہ گاڑی چلانے میں ماہر ہے. He has to admit she is expert in driving. دیکھیں ایکچولی it is the same old sentence. پچھلا جیسے کہ جملہ گزرا ہے اس میں ہم نے صرف ڈرائیونگ کا لفظ کا چینج کر لیا کہ he has to admit she is expert in driving. ماننا پڑے گا تم کہانیاں سنانے میں ماہر ہو. I have to admit you are expert in story telling. اچھا اسٹوری ٹیلنگ ہوتا ہے کہانیاں سنانا. I have to admit you are expert in story telling. یا اگر میں یوں کہتا ہوں کہ ماننا پڑے گا تم جھوٹ بولنے میں ماہر ہو. I have to admit you are expert in telling lies. Telling lies ہوتا ہے جھوٹ بولنا. I have to admit you are expert in telling lies. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہانیاں سنانے کی, تو I have to admit you are expert in story telling. اسے ماننا پڑے گا وہ سلائی میں ماہر ہے. He has to admit she is expert in stitching. دیکھیے ایکچولی وہی سینٹنسز ہیں جن کو ہم بار بار صرف آپ کی پریکٹس کے لیے, آپ کے نالج کے لیے ریپیٹ کر رہے ہیں, تاکہ آپ کو بجائے پیرٹ فیشن کے یعنی رٹا لگانے کے سمپلی آپ سننے کے بعد آپ کو یہ زبانی آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے, آپ بول بھی سکیں گے اور ان کو لکھ بھی سکیں گے. He has to admit she is expert in stitching. He has to admit she is expert in stitching. ہمیں ماننا پڑے گا وہ بے وقوف بنانے میں ماہر ہیں. We have to admit they are expert in befooling. We have to admit they are expert in befooling. دیکھیں ایکسپرٹ ان کے بعد ہم نے انک فارم زیادہ تر استعمال کیا ہے, لیکن اگر ہم چاہیں تو یہاں ناؤن بھی یوز کر سکتے ہیں. ماننا پڑے گا وہ پڑھانے میں ماہر ہے. I have to admit he is expert in teaching. I have to admit he is expert in teaching. ہمیں ماننا پڑے گا وہ منصوبہ بندی میں ماہر ہیں. We have to admit they are expert in planning. We have to admit they are expert in planning. اسے ماننا پڑے گا وہ خریداری میں ماہر ہے. He has to admit she is expert in shopping. He has to admit she is expert in shopping. ماننا پڑے گا کہ وہ دوستی نبھانے میں ماہر ہے. I have to admit she is expert in maintaining friendships. ماننا پڑے گا کہ وہ مارکیٹنگ میں ماہر ہے. I have to admit she is expert in marketing. I have to admit she is expert in marketing. ماننا پڑے گا کہ تم زبانیں سیکھنے میں ماہر ہو. I have to admit you are expert in learning languages. I have to admit you are expert in learning languages. So you must have noted in all these sentences ہم نے صرف ایکسپرٹ ان کے بعد انک فارم چینج کی ہے یا ناؤن چینج کیا ہے تو نیا سینٹنس بنا لیا. اور ماننا پڑے گا I have to admit, اگر کسی اور کو ماننا ہو اسے ماننا پڑے گا he has to admit, انہیں ماننا پڑے گا they have to admit. تو you can make changes. اس کے بعد آپ نے از آر ایم کے بعد, چونکہ ہم نے تمام سینٹنسز پریزنٹ میں لکھی ہوئے تھے اس لیے از آر ایم کے بعد آگے ایکسپرٹ ان کے بعد انک فارم یوز کی ہے. I think that's enough for today.
Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.